and welcome to my channel MU Changing Lives. I'm your teacher Mrs. Kessel and I am here with a very informative video today. But before going on with the video, please do not forget to subscribe the channel MU Changing Lives. Dear students, today in our grammar series, we'll be learning pronouns. And within the pronouns, we'll be learning what are personal pronouns. Let's see what are pronouns and personal pronouns. Pronoun is a word that is used to replace a noun. For example, in the underlined sentence, you can see, Afsha went to the market and she bought bread. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाउन फर्स्ट स्टेटमेंट में सेंटेंस में यूज हुआ है अफशा, जो कि सब्जेक्ट भी है. इसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, इसकी रेपिटेशन को ब्रेक करने के लिए हम इसकी जगह जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे वो जेंडर वाइज डिफरेंट हो, वो अल्फाज कहलाते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन में एक और काइंड उसकी है पर्सनल प्रोनाउन. Let's see what are personal pronouns. Personal pronouns are the words that is used to replace a noun, but it refers to a person or a thing. Personal pronouns वो pronouns होते हैं जो कि एक ऐसे noun को replace कर रहे हैं which stands for a person or a thing, जो किसी शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल होता है. इसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में क्या डिफरेंसेस हैं. Dear students, please do not forget that within the personal pronouns there are two different cases. Personal pronouns दो तरह से इस्तेमाल होते हैं. Personal pronouns are used in subjects and personal pronouns are used in the object. Let's see what is subject and what is an object. Subject कहा जाता है उन तमाम अल्फाज को जो सेंटेंस में एक्शन को रेफर करते हैं या जिनके बारे में एक्शन होता है. इसी तरह से सब्जेक्ट कहा जाता है उन तमाम अल्फाज को जो कि किसी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. ऑब्जेक्ट कहा जाता है उन तमाम अल्फाज को जो रिसीवर ऑफ द सब्जेक्ट एक्शन होते हैं, यानी सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं और इनमें और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है. सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो सब्जेक्ट होंगे और जो कि प्रोनाउन भी होंगे और वो सब्जेक्ट बनेंगे एक वर्ब के, and they will be used only in the subject. आसान अल्फाज में वो तमाम प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जा सकते हैं और सब्जेक्ट में आएंगे या अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे, वो प्रोनाउंस सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी वेंट टू द स्टोर. वेंट वर्ब है, शी यहाँ पे उसका subject है. And why she is a subject? Because the information in the sentence is given about she. She के बारे में इस अल्फाज का जो मजमुआ है, जो जुमला है, वो she के बारे में बता रहा है. That's why it is a subject pronoun. But there is a very important point to remember here. Subject pronouns generally appear before the verb. Subject pronouns verb से पहले आएंगे अमूमन. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब. पॉइंट टू रिमेंबर इज सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, whereas object pronouns are the receiver of an action of the subject or of the verb. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करते हुए रेफर कर रहे होते हैं और हमेशा वर्ब का रिसीविंग एंड होते हैं. और फॉर whom an action was performed. Now a very important thing about object pronoun, they generally appear after the verb.
जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं एज कंपेयर टू द सब्जेक्ट जो कि वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं. लुक एट द सेंटेंस, जॉर्डन बॉट हर रोजेस. यहां पे हम देख रहे हैं कि हर इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट जॉर्डन के एक्शन को रिसीव कर रहा है. क्लियर? Now, personal pronouns. Let's see what are subject pronouns. Pronouns, चाहे वो subject हैं, चाहे वो object हैं, वो 3 persons को belong करते हैं. First person, second person and third person. इसी तरह से there are 2 different cases for all these 3 persons. Singular and plural. फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है जो कि I होते हैं. इसकी सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट में I है, प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट में V है. सेकंड पर्सन वो लोग होते हैं या वो मुखातिब होते हैं जो हमारे सामने मौजूद होते हैं, जिनके साथ हम बात कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड इन नरेशन इन पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड पर्सन. इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेकंड पर्सन दोनों केसेस में सिंगुलर और प्लूरल में अपनी फॉर्म सेम ही रखते हैं. और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं विच आर रेफर्ड टू बट आर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि हमारे सामने मौजूद नहीं होते और हम जिनके बारे में कुछ रेफर करते हैं. इनकी सिंगुलर फॉर्म है ही, शी, इट. शी एंड ही आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, इट फॉर द थिंग्स. और इनकी प्लूरल फॉर्म है दे. और इसी तरह से थिंग्स के लिए जो इनकी प्लूरल फॉर्म यूज होती है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं, these or that or those. So I hope it is clear to you. Now let's practice and understand what we have learned up till now. There is a sentence before you. आपके सामने एक sentence है. आपने इसमें identify करना है कि which pronoun is used और इसी तरह से which case is used, whether singular or plural, or which person, first, second or third. In the sentence, they went to the basketball game. The pronoun is they. They is a plural pronoun and this is a third person plural pronoun. In the second sentence, in June we will start summer vacation. The pronoun is we. And we is a first person plural pronoun. In the third sentence, he took French class in 9th grade. He is the pronoun. It is a subject pronoun and it is a third person singular pronoun. You all have a quiz on all pronouns. You is a pronoun and this is a plural second person pronoun over here. It is used as a plural second person pronoun over here. Clear? Now the object pronouns. Like subject pronouns, we have again the 3 different persons for object pronouns as well. First person, second person, third person. And again we have 2 different cases for object pronouns, singular and plural. First person में singular object pronoun me use होगा, plural में us use होगा. Second person में like the subject, we have the same singular and plural form. The only addition we used to do is we are adding yours without apostrophe. This is also used. And third person में हमारे पास है her and him and it. It has the same form. वो subject pronoun में भी third person में अपनी form एक ही रखता है और object pronoun में भी it अपनी form को change नहीं करता. और plural third person pronouns in the object are used as them. Them use होता है object pronoun plural के तौर पे. Clear? Now let's see and practice the object pronouns. In a sentence, Skylar gave her roses. The pronoun here is her and her is third person singular pronoun. In the second sentence, the teacher gave us an assignment. The pronoun is us. And it is first person, yes, plural pronoun.
Next, the email was sent to them yesterday. Them is a pronoun, but it is used in its objective form. It's an object pronoun and it is third person plural. I told you all about the quiz. Here, you is the pronoun which is used in the object form. And this is in its second plural form, second person and plural form. Now, dear students, there are certain exceptions to this rule as well. Please keep on remembering that every grammar rule has an exception. And that is based upon how the native speakers have used these words, have used these phrases or these things. It means कि जो rule होता है grammar का, अगर अहले ज़बान, ये अथॉरिटी सिर्फ नेटिव स्पीकर्स के पास है, सिर्फ अहले ज़बान के पास है कि वो अगर इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से तब्दील करना चाहें तो वो कर सकते हैं और वो तब्दील इस्तेमाल, वो चेंज्ड यूज भी एक रूल बन जाता है. दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन, बट दिस अथॉरिटी इज ओनली विद द नेटिव स्पीकर्स. अब हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के यूज में एक एक्सेप्शन है और वो क्या है. The exception to this is when the verb is a linking verb and not an action verb. Subject pronouns are used after these verbs. हमने पढ़ा है कि subject pronouns are used before the verbs. But if the verb is the only verb and it's not an action verb, it is a linking verb. Linking verb कहा जाता है उन तमाम helping verbs को, उन तमाम modal auxiliaries को, modal verbs को जो कि सिंगल हैंडेडली यूज होते हैं, यानी वो अपने साथ किसी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब के नहीं यूज होते. फॉर एग्जाम्पल एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट की हैं, इसमें तमाम हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं. अगर सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ब है और उसके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को इनके बाद यूज करेंगे या इन वर्ब्स के बाद इस्तेमाल करेंगे. Look at the example, the best player is she. Now you see in this example, is the only verb over here. और चूंकि is एक helping verb है और सिर्फ अकेला आया है इस जुमले में, तो फौरन से हमने अपने दिमाग में ये आइडिया ले आना है जो हमने पढ़ा है कि ये linking verb है. और इसके बाद आप देखें हमने verb के बाद हमने subject form यूज की है. This is an exception. We are not using here the object form. Even after the verb. तो verb में अगर verb linking verb है तो उसके बाद subjective form आएगी. This is a subject pronoun. Now let's practice. She put on the mittens. She is a pronoun which is used over here and it is used in a subjective form. It is a subject and it is a singular and third person singular. They were black with white snow flakes. They is a pronoun which is used over here. They is used in its subjective form. And it is third person singular. Marcy's mother gave them to her. We have them used as a pronoun. And you see that her is also a pronoun which is used over here. Both of these are object in their object form and objective pronouns. And इनमें से them जो है वो third person singular है और her जो है वो वो third person plural नहीं है और them third person plural है. Marcy feels the best mother in the world is she. She is used as a pronoun over here, but it is used in its subjective form. It is not used in its object form. Why? Because this sentence is having a linking verb is. और she यहाँ पे अपनी किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. I hope the idea is clear to you by all these examples. Now, the teacher will give you all a quiz soon. Here, the pronoun is you. And it is used in its objective form. And it is a plural second person pronoun used over here as an object. Clear? Now, dear students, to test your knowledge, what we have learned in this session,
Let's ask a question. What is a pronoun? The answer is it is a word that takes the place of a noun in order to avoid the repetition. What is a personal pronoun? A word that takes the place of a person or thing. Give the 7 subject pronouns. There are few pronouns which are most commonly used, and that's why we are terming them in the grade of 7. I, we, you, he, she, it, and they. When do you use subject pronouns? Subject pronouns कब इस्तेमाल होंगे? Subject pronouns subject के तौर पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर linking verb है तो after the linking verb भी use होंगे. As you can see over here, when it is the subject of the sentence or after a linking verb. List the basic linking verbs. Is, am, are, was, were, be, being, has, have, had. All these are linking verbs. Then what are the 7 object pronouns? Me, us, you, her, him, it, and them. And when we use these object pronouns, please remember, after action verbs or to describe who is receiving the action of the verb or to describe for whom the action was performed. I hope the idea is clear to you about the pronouns. Thank you for watching this channel and this video. Please keep on watching so that you have all the information about the grammar. अल्लाह हाफिज, गुड बाय, और इसके बाद मिलेंगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज.